Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, on this platform as we are studying some UPSC mains essay topics. So guys, we are in these topics as you know discussing what to write in the essay, that is content of the essay, as well as we are focusing on structure part of the essay. So let's study today's topic guys. Today we are going to discuss the topic which is a factual topic, that is neglect of primary healthcare and education are reasons for India's backwardness. Okay, so it was quite a straightforward topic that UPSC had asked, that neglect of healthcare and education is causing India's backwardness. So here guys, you can in introduction you can add about any case study or more in such a factual essays. You begin with some statistics that you have. Okay, for example, how India's healthcare indicators or number of child marriages that are happening in India or malnourishment etc impacting India's productivity or so on, or how India may education sector may lack of higher education or high tech education is leading to this backwardness, or no, or entrepreneurial education that India lacks, and because of which there are only job seekers and not job creators, and how that impacting India's backwardness. So you can add some statistics, important statistic that you know in this. Then provide the outline of the essay, what you are going to discuss in detail briefly. वो outline add कर देना. So now first guys, then as you go in main body, we have discussed that definition part is the most important. So first begin with the definition part, that define the importance of healthcare. Okay, why healthcare is important. Okay, primary healthcare, secondary, tertiary, quaternary, सारा healthcare का concept you establish. Okay, then along with that healthcare aspects. Okay, what is basically discuss the condition of India, how much penetration of medical insurance industry, etc., or our condition on universal healthcare or government schemes, etc. So basically define this entire healthcare here. Then define the importance of education. Okay, why education is important. Okay, here you can also explain difference between literacy and education, and explain then types of education and how they create a productive human resource and so on. Okay, then define how healthcare is linked with the backwardness, जो पहला aspect है कि link your healthcare with backwardness, and then education with backwardness. Now guys, essay clearly says India's backwardness, so only discuss India specific statistics. Don't discuss the condition in Africa or Pakistan, Bangladesh, or any other less developed or developing countries. So define how healthcare is linked with backwardness. So here guys, you need to first don't give just example or statistics, first debate it at a philosophical level. So here guys, you can discuss the critical period concept. Okay, so it's a concept in psychology which states that till the time period, critical period is a time period till you reach puberty. Okay, so these initial years of your life till you reach puberty, when your maximum development takes place. Okay, body has a full potential. Okay, and that has to be developed. And in that time period guys, our entire biological, psychological, cognitive, IQ, emotional, perceptual, sensory development takes place. And so in this period guys, how much stimulation you get, how much good quality healthcare, nourishment, food you get, okay, impacts your life or your development, your IQ, say like your entire personality for a lifetime. And that's why word is critical period. And so healthcare is very important, because any damage results in critical period that will cause backwardness for that person as an individual level, and then backwardness at a society level or at a national level. Okay, then then it also creates bad healthcare condition or bad in initial years, not getting enough medical attention, healthcare attention, etc. That creates weak human resource. Generally in India we have this sun metaphor reference concept. Okay, that parents are having kids. Okay, तब तक बच्चे पैदा करो जब तक they don't get the sun. तो इस प्रोसेस में गाइस की पहले तीन चार लड़कियां पैदा होने के बाद भी दे कीप ऑन ट्राइंग बेबी, एंड तीन लड़कियों के बाद चौथा लड़का पैदा हुआ, चार लड़कियों के बाद पांचवा लड़का पैदा हुआ. लेकिन इन दिस कंडीशन गाइस, यू डोंट गिव enough good opportunity of education as well as healthcare to those girls, and that impacts their life. They get married off as a child marriage, etc. Okay, not provided good quality education, good quality healthcare, and you impact their entire life, and which then huge part of our workforce is not being productive and leads to this backwardness.
Then discuss the expenditure on healthcare. Okay, how much large amount of money, agar if there is a bad healthcare, okay, there is a prevalence of communicable, non-communicable diseases continuously in the society or in a nation. Okay, large amount of money that should go on investment on productive things. Okay, people's money get diverted on maintaining the healthcare or paying for the healthcare, medical insurance, and so on. And guys, largely this not having this proper healthcare plan, ये वो बहुत बड़ा रीजन है बैकवर्डनेस और पॉवर्टी का. अभी लाइक मेरे गांव में भी एक केस हुई. एक विलेज में खेती करने वाला ही एक लड़का था. हिज फादर हैड अ पैरालिसिस अटैक. अब कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, कोई क्लेम नहीं, कोई ये नहीं मेडिकल का प्लान खरीदा हुआ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस कि कहाँ कुछ होता है, जब होगा देखेंगे, वाई अभी से पैसे भरे मेडिकल इंश्योरेंस के. अब इस मेंटालिटी की वजह से नाउ सडनली 12-14 लाख का खर्चा ही हैड टू पे, ओके, आउट ऑफ पॉकेट्स और आउट ऑफ लोन और एग्रीकल्चर लोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इसको चुकता करने में आगे जो इतने साल जाएंगे. So this expenditure on healthcare or not having proper plans for healthcare can impact or brings very severe poverty or loss of income, loss of resources, and is linked with your backwardness. Then mortality rates, how much is the mortality rate, वो भी आपका healthcare का एक important parameter है, that is linked with the बैकवर्डनेस. अब यहाँ पे फैक्चुअल ऐसे गाइज गाइज जितना लिखो उतना कम है, लेकिन एज मच टॉपिक्स यू कैन ऐड और लिंक दैट विल बी बेटर. नाउ गाइज, डिफाइन हाउ एजुकेशन इज लिंक्ड विद द बैकवर्डनेस. ओके, एजुकेशन की वजह से बैकवर्डनेस कैसे होता है. ओके, सो गाइज इफ यू डोंट गेट गुड क्वालिटी एजुकेशन, ओके, एजुकेशन दैट इज फिर वो हेल्थ केयर एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स एजुकेशन हो, सेक्स एजुकेशन हो, देन आपका कंसेप्चुअल विजडम या आईक्यू डेवलपमेंट का पार्ट हो, दैट एजुकेशन, देन हाईटेक एजुकेशन, creativity education, everything. Okay, then you won't be a productive member of society. It creates then cycle of poverty, perpetuity mein you will be trapped in that poverty. If you don't get good quality education, you won't have the good career, and it is very difficult to break this cycle of poverty. Even it creates cycle of disadvantages. तो बहुत दो important concept है, cycle of poverty, cycle of disadvantage. And education, finance, education, and healthcare are three important factors that cause this cycle of poverty and cycle of disadvantage. Okay, so you should mention these topics and how they cause this cycle of poverty, cycle of disadvantage, because if you don't have good education, you will never be able to be a part of a high-tech economy, intellectual economy, and mostly you will have to invest your energy into a manual labor jobs. Okay, so non intellectual labor jobs में आपको most of the time energy invest करनी पड़ेगी. Okay, श्रमजीवी जॉब्स करने पड़ेंगे, ना कि बुद्धिजीवी. और ये जो बुद्धिजीवी जॉब्स है गाइस, इंटेलेक्चुअल लेबर के जो जॉब्स है, यहाँ पे द ग्रोथ इन सैलरी, इनकम, वेल्थ is largely there. Opportunities are more in intellectual labor related jobs, and if you don't have good education, that growth will not be there. And it is overall linked with the your backwardness at an individual level, that person's, or a backwardness at a community level, at a national level also. So you can link this with the backwardness to education, how it is creating backwardness. And overall countries development गाइस, जो हाईटेक कंट्रीज, दुनिया की सबसे रिच कंट्रीज है, they are extremely well advanced in high tech jobs, like America, Sweden, France. Most of those countries are extremely high tech economies, and these high tech economies can only be produced if you have good quality high tech education. So your education is very strongly linked with the backwardness. Then you can also have to mention this digital and financial literacy, which is backbone of today's economy. So digital and financial literacy is a very important aspect, and without digital education today, okay, it is impossible for an individual or even for a community level to grow. And having a good financial awareness, financial literacy, so digital financial literacy education is also very important parameter that is causes your country's economy's backwardness or individuals backwardness. Then middle income trap, this is also very unique concept that you should know. पूरा एक अलग से ऐसे आ सकता है, उस पे भी मैं एक आध ऐसे टॉपिक ऐड करके I will provide you the structure. So ये middle income trap जो है, that India's economy is facing now, China has faced previously. तो आपकी जो बेसिक जस्ट टॉपिक अभी इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको बता देता हूँ कि जो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, कि गिविंग द डूइंग ईज ऑफ बिजनेस और गिविंग चीप लैंड और रिसोर्सेज एट चीप प्राइसेस, ये जो सारी पॉलिसीज है, ओके, एक ये आपकी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को मिडल डेवलपमेंट कंट्री के स्टेज तक लेके आ सकती है.
लेकिन मिडिल इनकम से अगर आपको हाई इनकम ग्रुप में जाना है, देन यू नीड टोटली डिफरेंट पॉलिसीज. एंड वाई गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ओके, जो लीस्ट डेवलपिंग से डेवलपिंग कंट्री बनाने में काम आ सकता है, डजंट वर्क, एंड यू नीड कंप्लीटली चेंज पॉलिसीज. तो इसलिए जो चाइना के साथ हुआ, मिडिल इनकम ट्रैप, ओके, एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ दैट. ओके, तो वही फिर पूरे बहुत लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, हाईटेक प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ता है. टोटली यू नीड टू चेंज द नेचर ऑफ इकोनॉमी, द वे यू डू बिजनेस. कि चीप लेबर, चीप इलेक्ट्रिसिटी, चीप सब्सिडी, टैक्स ब्रेक, इससे ओके यू कांट ग्रो इनटू अ हाई इनकम इकोनॉमी. और ये अगर जाना है तो दो ही चीजों से, हाउ मच इज योर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, R&D, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, या आपके पास जो भी पोटेंशियल है, हाउ गुड यू मैनेज टू हार्वेस्ट, लाइक सॉफ्टवेयर हो या जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री एक्सेट्रा. तो ये एजुकेशन रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है. ओके, ओनली विद द गुड इन्वेस्टमेंट इन R&D, एजुकेशन, रिसर्च, और हाईटेक स्कूल कॉलेजेस, and high-tech products you produce, the way in America they are producing Facebook, then Google, etc., or artificial intelligence related. Only such a investment in such a sectors, etc., can bring your economy into a high income group. Okay, so this lack of high-tech economy is also you can discuss with the backwardness. देन गाइस फिर इसके बाद, अब ये बहुत फैक्चुअल टॉपिक है, तो जितना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा फैक्ट, सिर्फ मार्क उसी से आएंगे. देन डिस्कस इज हेल्थ केयर निग्लेक्टेड, इफ सो हाई. देन चलो हेल्थ केयर का हमने बैकवर्ड से लिंक तो बना दिया. देन हमने एजुकेशन का भी बैकवर्डनेस से लिंक बना दिया. लेकिन डिस्कस इज हेल्थ केयर निग्लेक्टेड इन इंडिया, एंड इफ सो देन व्हाई हेल्थ केयर इज निग्लेक्टेड. ओके, ये भी एक अलग से डायमेंशन बना के लिखना, दैट यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन बी डन अबाउट इट. सो पहले एस्टेब्लिश करो कि इज हेल्थ केयर निग्लेक्टेड. यस, ओके, ये दिखाता है आपको सेगमेंट कि इंडिया में इतना ही मेडिकल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है. ओके, इतना प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है, पर लैक पॉपुलेशन कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें डिबेट करो. ओके, एंड कितना बर्डन है, पॉपुलेशन बर्डन ऑन हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक्सेट्रा, कितनी स्कीम्स है ओके टू सब्सिडाइज द मेडिकल एजुकेशन. या राजस्थान अकेला स्टेट है जहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, मेडिकल हेल्थ केयर. सो दिस लैक ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेट्रा. तो ये आप डिस्कस करो कि हेल्थ केयर इज निग्लेक्टेड, व्हाई, उसके भी रीजन दो. और फिर उसके बाद देन व्हाट सॉल्यूशंस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर टॉपिक में, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट. तो ये तीन सेगमेंट में भी अलग से ऐसे डिबेट करना. देन सेम पैटर्न फॉलो करना एजुकेशन के लिए भी, कि इज एजुकेशन निग्लेक्टेड इन इंडिया. ओके, तो जो इंडिया में एजुकेशन निग्लेक्टेड है, तो कितने जेडपी के स्कूल्स है, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है. ओके, कैसे वो निग्लेक्टेड है. इंडिया में कितने लाइक महाराष्ट्र के, कर्नाटक, केरला, ये 3-4 स्टेट है जहाँ पे ज्यादा इतने सारे इंजीनियरिंग, MBA और अदर हाईटेक कॉलेजेस है. वाइल रेस्ट ऑफ द इंडिया में परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन के बहुत कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हाईटेक नेचर की. IIT IIMs कितने हैं, ये सारा, और ये निग्लेक्ट क्यों हुआ. ओके, उसके भी एस्पेक्ट आप डिस्कस कर सकते हो, या जो भी निग्लेक्ट चल रहा है किस एरियाज में हो रहा है. ओके, लार्जली वी आर फोकसिंग, नॉट फोकसिंग ऑन क्रिएटिविटी, एजुकेशन, और कोई वी आर ओनली, आवर एजुकेशन सिस्टम इज फेलिंग to produce entrepreneurs or job creators and producing more job seekers. Yeah, there is a huge gap between the education that we are getting in स्कूल कॉलेजेस और जो इंडस्ट्री में चाहिए. तो इंडस्ट्री एजुकेशन गैप जो है, यूनिवर्सिटी गैप, ये काफी वाइड है. तो ये क्यों हो रहा है, ये इसके निग्लेक्ट क्या, और उसके लिए फिर सॉल्यूशंस क्या, तो वो भी अलग से फिर से डिबेट करना. ओके, सो यू आर फर्स्ट डिफाइनिंग हेल्थ केयर, डिफाइनिंग एजुकेशन का इंपॉर्टेंस, then linking healthcare with the education backwardness, then education with the backwardness, then why is healthcare neglected, why and what is the solution, then is education neglected, why and then what is the solution. अभी तक 10 पॉइंटर्स पे आप ऐसे को डिबेट कर रहे हो. ओके, तो जितना ज्यादा लेवल पे एनालिसिस कर सकते हो वो करना, और फैक्चुअल ऐसे में तो ये बहुत ज्यादा लगता है, आप कितने ज्यादा पैरामीटर पे डील करो. Then other side, that healthcare and education neglect is not reason for backwardness. Okay, चलो healthcare and education are the reasons for backwardness. Okay, fine, लेकिन they are alone not the reason. Okay, तो explore the other side. Okay, healthcare और education के अलावा क्या क्या backwardness से लिंक करता है. Okay, बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स है, कितना आपका पब्लिक सेक्टर इफिशिएंट है, कितना प्राइवेट सेक्टर इफिशिएंट है. ओके, कितने इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII, FDI एक्सेट्रा, कितना सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी है. ओके, हाउ मच यू आर इन ओपन इकोनॉमी, फेयर मार्केट कंपटीशन कितना है, बहुत सारे पैरामीटर्स है. ओके, दैट डिफाइन
और इम्पैक्ट बैकवर्डनेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या नहीं है, ब्लैक इकोनॉमी कितना है, जो डिस्करेज करता है एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड बैकवर्डनेस से, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है, हाउ मच गुड सपोर्टिव क्लाइमेट इज देयर फॉर द इंडस्ट्री और सो ऑन, ओके, या टैक्स बर्डन कितना होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर भी है जो बैकवर्डनेस से लिंक होते हैं, ओके, या नेचुरल कैलामिटीज का कितना प्रिवेलेंस होता है, रिपीटेडली डिजीज प्रिवेलेंस कितना है, वो हेल्थ केयर में आएगा, ये डिजीज, नेचुरल कैलामिटीज एक्सेट्रा। तो थोड़ा वाइड जाके ये भी सारा डिस्कस करना कि बैकवर्डनेस इज नॉट ओनली हेल्थ केयर एजुकेशन का इशू, ओके। सो देन फिर जो मैंने बताया कि हेल्थ केयर इंप्रूव करो तो बैकवर्डनेस एड्रेस हो सकता है टू ग्रेट एक्सटेंट, एजुकेशन से भी हो सकता है, बट दे आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट रीजन। तो सफिशिएंट कॉज भी लिखो कि व्हाट एल्स इज रीजन फॉर बैकवर्डनेस, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, ओके। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन इज अलोन नॉट द रीजन फॉर बैकवर्डनेस। तो बहुत सारे बाकी भी फैक्टर्स हैं और उनके रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं उसको भी आप लिखो। एंड देन कंक्लूजन में, अब इस कंक्लूजन में मैं जो बोलता हूँ जनरली थोड़ा विजनरी, फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दो, लेकिन ऐसे ऐसे में वो देना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए फिर ऐसे को समराइज करना, ओके, ओवरऑल आपने अभी तक क्या क्या लिखा उसको। तो कंक्लूजन में आप बना सकते हो कि so thus we have understood the significance of healthcare and education in and how they are linked with the backwardness. And then we also explored or analyzed that why education, healthcare is neglected, and why education is also neglected and what can be done about it. But improving healthcare and education alone will not address the issue of backwardness, and there are many other multi-pronged strategy that we have to deploy, okay, which will finally improve or address, and such as strategies that we need to address like middle income trap, etc., etc., wo mention kar do. And only if we manage to face this, deal with this, harvest our demographic potential dividend, then we can able to remove, okay, people from backwardness and make India high income group country or so on. तो इस तरह से पूरा उसका ये समराइजेशन करो टॉपिक का, ओके। आउटलाइन में भी थोड़ा सिमिलर ही पार्ट करना है आपको, ओके, आउटलाइन में, लेकिन आपको एब्स्ट्रैक्ट वे से लिखना है कि ऐसे में आगे क्या क्या लिखा है। तो इसी ऐसे का आउटलाइन कैसे होगा कि इन दिस ऐसे फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर, देन विल गो ऑन ऑल्सो अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, then we'll try to discuss, okay, or try to understand is there any link that exists between healthcare and backwardness, and whether neglect of healthcare leads to neglect of leads to backwardness. Then we'll also discuss if there is any link, causal link between education and backwardness, and if there is any reason that neglect of in education can cause backwardness, and if there are links, then what are the factors that link them, okay, that we will discuss in the essay. Then we'll go on discussing that if healthcare and education, if we establish the link between healthcare and education and with the backwardness, then is essay also we will explore in essay, is healthcare in India neglected, okay, and if so, then what can be done about it. Then we also will discuss that if education is neglected and in which area it is neglected, and if so, then what can be done about it. And then we will also explore, okay, are there any other factors than education and healthcare that can also link with the backwardness, and what can be done about it, ओके। तो आपने कुछ बताया नहीं आगे क्या लिखा है, लेकिन थोड़ा आउटलाइन पूरी ऐसे की थी। सो इंट्रो, ये आउटलाइन, एंड देन एक एक में ऑलमोस्ट कितने सेगमेंट आपने लिखे देखना, हेल्थ केयर की डेफिनेशन 1 2 3 4, ओके, वो लिंक का पार्ट, ओके। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर बैकवर्डनेस का लिंक, एजुकेशन बैकवर्डनेस का लिंक, फिर इज इट निग्लेक्टेड, इफ सो व्हाई निग्लेक्टेड, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, 3 फैक्टर। फिर यहाँ के भी 3 फैक्टर, इफ एजुकेशन निग्लेक्टेड, व्हाई एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, तो 9 फैक्टर ऑलरेडी हो गए। देन व्हाट else than education backwardness is education and healthcare causes backwardness, 10th factor, and what can be done about it, 11th, and then solution 12, and आपका intro outline 14। तो 14 सेगमेंट में, okay, you have written your essay, okay। अब ये जितने ज्यादा सेगमेंट you will get very good marks, जितना ज्यादा प्रॉपर प्रेजेंटेशन, और इसमें भी जहां भी पॉसिबल हो चार्ट ऐड करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये जो सारे मैंने फैक्टर दिए, इससे और भी फैक्टर हो सकते हैं, आप चार्ट में डाल दो, ये सारे फैक्टर जो है वो चार्ट में डाल दो। तो जितने ज्यादा फैक्टर्स आप चार्ट बना के डाल दो, दैट विल बी गुड प्रेजेंटेशन। फैक्चुअल ऐसे में ज्यादा चार्ट ट्राई करना, एंड ट्राई टू बी मल्टी डायमेंशनल, और डेप्थ ऑफ द डेटा विल बी द ओनली game changer in such a essays, okay। So that's all for now, guys. Thanks for listening, and check out my other essay videos also, and do subscribe to my channel and share with your friends. So thanks for listening, guys. Bye bye.